Hello everyone, welcome you all at India's largest online learning platform. Let's start with a brief introduction about myself. My name is Ravi Sir. 8 years of teaching experience in the field of GATE and engineering services examination. I've qualified GATE 5 times and also state engineering services examination of the Pradesh and some Maratona places like NTPC, SAIL, BGM, Coal India Limited and some other places like BVCI, Nuclear Power Corporation of India Limited. First of all, you all need to download Unacademy Learning app. All need to download Unacademy Learning app. And after downloading this app, you will get daily live classes, live tests and quizzes, structured courses, unlimited. So what is the benefit of live classes is you can chat with your educator, you can ask your doubt, you can answer the polls. कहने का मतलब ये है कि आप एक फुल इंटरेक्टिव क्लास उसको बना सकते हैं। फुल इंटरेक्टिव क्लास होगी जिसमें आप अपने एजुकेटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट्स जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में। लाइव टेस्ट आपको लाइव टेस्ट मिलते हैं, क्विजेज मिलती हैं अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए। आप लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, क्विजेज में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल दिस थिंग्स विल बी प्रोवाइडेड फ्री। स्ट्रक्चर कोर्सेज, आप जो भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं वेदर दिस गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज, फ्री कोर्स में आप एडमिशन उस कोर्स में यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस। लाइक सॉरी, स्ट्रक्चर कोर्स मीन्स आपका जो सिलेबस है अनअकैडमी पे, जो सिलेबस डिजाइन है वो आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अनलिमिटेड एक्सेस, किसी वजह से अगर आपने लाइव क्लासेस मिस कर दी है तो आपको उसका रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल कराया जाता है जिसको आप अपने टाइम और कंफर्ट के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं। वॉच दैट फ्रॉम योर कंफर्ट एंड टाइम एंड you will get chance to learn with the other top educators across India. जो कोर्सेज अनअकैडमी पे चल रहे हैं फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, अलग अलग ब्रांचेस के लिए लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब ब्रांचेस के लिए अलग अलग नंबर ऑफ कोर्सेज रन करते हैं थ्रू आउट द ईयर। लाइक देयर आर 24 कोर्सेज फॉर मैकेनिकल, 18 कोर्सेज फॉर इलेक्ट्रिकल, CSIT एंड 7 कोर्सेज फॉर सिविल। ये सारे कोर्सेज थ्रू आउट द ईयर आपके रन करते हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिसका बेनिफिट आप। There are two kinds of courses that are available at Unacademy. One is the plus and other is the iconic. So plus का क्या benefit है? You will get India's best educator, interactive live classes, structured courses and PDFs, live test and quizzes. All these things you will get in Unacademy plus subscription. Right? ये सारी चीजें आपको iconic में, best educator, interactive live classes, structured course and PDF, live test. लेकिन आइकॉनिक का जो यूनिक फीचर है दैट इज पर्सनल कोच। यू विल गेट अ पर्सनल कोच जिनके साथ आप 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं, 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं अपने डाउट्स, अपने जो भी एग्जामिनेशन रिलेटेड डाउट है, सब्जेक्ट की प्लानिंग से रिलेटेड डाउट है, किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कम फोकस करना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डिस्कस विद योर पर्सनल कोच। एक पर्सनल गाइडेंस, यू विल गेट अ पर्सनल गाइडेंस राइट थ्रू आउट योर सब्सक्रिप्शन। Personalized test analysis also you will get, study planner, preparatory, all those things you will get in the iconic subscription। right? ये जो प्लस के अलावा है इतने सारे बेनिफिट्स हैं आपको। स्टडी मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत। जो फी है फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन for 12 months, 18 months and 24 months. Fee is 30,250, 38,500 and 44,000। सब्सक्रिप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं, 1, 3, 6, 12, 18 एंड 24। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, सबकी फीस आपको यहाँ पर गिवन है। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, रेफरल कोड, इफ यू यूज दिस रेफरल कोड Ravi PY, you will get 10% discount and you have to pay for 24 months, you have to pay 39,600 रुपीज किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए। आपको जो डिस्काउंट है हर सब्सक्रिप्शन में मिलेगा, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ। लेकिन 6 मंथ या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो यू विल गेट 10%, सॉरी नो कॉस्ट EMI। तो यहाँ पे आपको नो कॉस्ट EMI
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन स्टोरी कोर्स अवेलेबल है इसमें 12 मंथ्स एंड 24 मंथ। 12 मंथ की जो फी है दैट इज 50,250, 45,225, और 24 month the fee is 74,000, 24 month the fee is 66,600 rupees। ये सारी चीजें हैं जिसका आप फुल बेनिफिट ले सकते हैं। अगर ये कोड यूज करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट होगा और जो अपनी फीस हो जाएगी 45,000 ऑलमोस्ट फॉर 12 मंथ्स एंड 66,000 फॉर 24। So I hope you got all these things, and you will get your subscription as soon as. So now let's start with upgrade, or from 28th December there is a course going to start, full batch, mechanical batch A, right, at 6 p.m. Then join that batch and get the benefit, get your benefit from it. जो हम पढ़ रहे थे दैट इज फ्लूइड मशीनरी, सब कुछ ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया इसमें। इम्पैक्ट ऑफ जेट, टर्बाइंस, सारी चीजें हमने एक एक करके पढ़ लिया था इसमें। इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ लिया, टर्बाइंस पढ़ लिया, टर्बाइंस का क्लासिफिकेशन, अलग अलग टर्बाइंस की क्लासिफिकेशन भी देख लिए थे, राइट। एल्टन व्हील, फ्रांसिस टर्बाइन, कैपलर, प्रोपेलर, सब कुछ हमने डिटेल में देख लिया था। करेंटली वी आर स्टडिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है हमने, सेंट्रीफ्यूगल पंप एज फार एज गेट इज कंसर्न, सेंट्रीफ्यूगल पंप। आज हम इस सेंट्रीफ्यूगल पंप पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट मी सी, जो क्वेश्चंस हम करेंगे कुछ उसमें से फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। वो फॉर्मूले में एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चंस स्टार्ट। लाइक वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट, वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट, that was power given by impeller to the water, and that was Pw2U2 by Pw2U2 by G। तो डिस्चार्ज था आपका, एक बार फॉर्मूला में आपको रिवाइज करा दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और डिस्चार्ज दैट वाज पाई d1 df1, and that is equals to पाई, इसके बाद कुछ इसके अलावा कुछ हेड थे आपका, जो स्टैटिक हेड था, h वाज स्टैटिक हेड, दैट इज s प्लस hd, राइट। टोटल हेड सम से लेके जहां तक आपका डिलीवरी था, hs इज सॉरी सक्शन हेड, hd इज डिलीवरी हेड, एंड देन स्टडी द मैनोमेट्रिक हेड h, that is Pw2U2 by G minus losses, या फिर ओके। चलो हमने अलग अलग टाइप की एफिशिएंसीज देखी थी, या फिर एचएम का एक फॉर्मूला आउट था, एचएस सॉरी मैनोमेट्रिक हेड का फॉर्मूला आउट होता हमने, ये सारे डिटेल में हमने डिस्कस किया है क्या होता है एचएस प्लस एचडी प्लस एचएफएस प्लस एचडी प्लस बीटी स्क्वायर बाई प्लस बीटी स्क्वायर बाई, दैट इज बीटी स्क्वायर बाई। ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया था, जिसमें एच एस इज सक्शन हेड, एच डी इज डिलीवरी हेड, एच एफ एस इज फ्रिक्शन हेड लॉस इन सक्शन पाइप, एच एफ डी इज फ्रिक्शन हेड लॉस इन डिलीवरी पाइप। चलो हमने कुछ एफिशिएंसीज देखी थी, हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, दैट वाज GHM by Pw2, okay, Pw2 by इसके अलावा मैकेनिकल एफिशिएंसी थी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, एंड दैट वाज power at the impeller, power at the impeller, that is water power, Pw2 by G and multiplied by weight of the water, and that is divided by tau, right। Now overall efficiency, देखते हैं efficiency आपकी, overall efficiency that is water power kilowatt of force divided by tau. What is water power? Rho G Q H, this is rho H by 1000, 1000 डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो शाफ्ट पावर है जनरली आपकी शाफ्ट पावर, एसपी इज शाफ्ट पावर, जनरली शाफ्ट पावर आपका किलोवाट में गिवन होता है, तो जो ऊपर का टर्म है उसको भी हमने शाफ्ट पावर में कन्वर्ट। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसके अलावा मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड, नेक्स्ट वाज मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड,
minimum starting speed that was मैंने आपको बताया that is v2 square by 2g minus v1 square by 2g that should be less than or equal to h. या फिर हमने एक फॉर्मूला इसका कन्वर्ट कर लिया था दैट इज n इक्वल्स टू 120 इंटू मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इंटू VW2 D2 by 5 D2 square minus D1 D2 square by plus D2 square minus D1. ओके, एक तो ये फॉर्मूला था मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड के लिए. देन देयर वाज स्पेसिफिक स्पीड. स्पेसिफिक स्पीड, what is specific speed? ns is n2 by n to the power 3. के अलावा कुछ मॉडल टेस्टिंग मैंने पढ़ा था, अंडर रूट एच एम बाई डी एन इक्वल्स टू कांस्टेंट q by t cube n that is constant t cube n q by d cube n is मॉडल टेस्टिंग था आपका कुछ t cube by n that constant and power by t5 and that is ये सारी चीजें आपकी कांस्टेंट. हमने ये सारी चीजें देख लिया था. इसके अलावा आपकी यूनिट क्वांटिटी थी जो हमने टरबाइन में पढ़ा था. यूनिट क्वांटिटी एंड यू दैट इज इक्वल्स टू n बाय रूट h क्यू यू यूनिट क्वांटिटी q बाय रूट h और ये कांस्टेंट होगी दैट इज कांस्टेंट एंड p यूनिट पावर दैट इज p बाय h टू द पावर 3 बाय एंड दैट इज ये सारी चीजें थी. इतनी सारी चीजें हमने देख लिया था, ऑलरेडी देख लिया था ये सारी चीजों को हमने. दैट इज n बाय रूट h q बाय रूट h p बाय. ये सारे फॉर्मूले थे जो मैंने ब्रीफ में बता दिया. और भी जो फॉर्मूले रह गया होगा हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे देख लेंगे. लेकिन ये जो फॉर्मूले हैं कार्बन पर सेकंड पर यूनिट वेट ये है दैट इज पावर गिवन बाय impeller, power given by impeller 2. This was power given by impeller 2. Okay, so let's begin with the today's session. We will be solving some problems today. So here is the problem. You first try it. Okay, you will read this question and try to solve. So I'll give you 1 minute to read this question and then start solve. Then try to solve. Try to think what is given and then what you get. Let us first see what is given here.
सेंट्रीफ्यूगल पंप है. सेंट्रीफ्यूगल पंप is rotating at 1500 rpm, delivers 0.2 meter cube per second at a head of 15 meter. Calculate specific speed of the pump and power required. Assume overall efficiency of the pump is 0.68. If this pump were to operate at 900 rpm, then what will be the head, discharge and power required for homologous condition under unchanged efficiency at पहले आरपीएम इसका 1500 था, बाद में इसको 900 कर दिया गया. तो आपसे पूछा गया है कि इसका हेड, व्हाट विल बी हेड, चार्ज एंड पावर रिक्वायर्ड, एच, क्यू एंड टी फाइनली क्या होगा, दैट हैज बीन आस्क्ड. Try to solve this. Let us first see what is given. Rotating at N1, that is given as 1500 rpm, delivers 0.2 meter cube per second, charge is 0.2 meter cube per second, and head of 15 meter. One is 15. 15. Calculate specific speed of the pump and power. Specific speed and power. So what is specific speed? जब overall efficiency given है, let us first add what is given, 0.68. पंप जो ऑपरेट कर रहा है 900 rpm. Second case में the pump is operating at 900 rpm. Then what will be the head, discharge and power required for homologous under the unchanged efficiency 2 rpm. So let us first solve for specific speed. And what is specific speed? N the root 2 by h to the power 3, h to the power 3 by. Now n is given as 1500, q is given as 0.2, h is given as 15 to the power 3 by. So let us try to solve this. 1500, right? Tell me the answer about this. 0.2 divided by 88.0. From here, the specific speed comes as 88.2. Specific speed is 88.2. Okay. ये आपको फर्स्ट मिल गया व्हाट इज. दूसरा हमें चाहिए पावर रिक्वायर्ड. तो पावर कैसे मिलेगी? ओवरऑल एफिशिएंसी आपको गिवन है. ओवरऑल एफिशिएंसी इज वाटर पावर बाय शाफ्ट पावर, दैट इज रो 2h by 1000 divided by shaft power. Right. This everything else is given here. यहाँ से शाफ्ट पावर हमने सपोज P लिख लिया, that will be रो कैंसिल हो जाएगा, 1000 ये हो गया आपका G. चलो रो by 1000 by 1000. What is given here? 1000 will be cancelled out. Rho is 49.8122. What is Q? Point 43.279. यहाँ पे power from here. The rho is 1000. ये तो 9.81. Discharge is 0.2. Head is 15. This is divided with 1000. Point. From here, power will be 43.28. Right? Whether is this power. मैंने फ्रॉम द फर्स्ट डे आई एम रिपीटिंग दिस दैट जहां पे भी आपको ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन होती है, जो मैक्सिमम टाइम, राइट, 99% टाइम दिस इज गिवन जस्ट टू फाइंड आउट या तो डिस्चार्ज क्यू मिल जाएगा या फिर शाफ्ट पावर. दो चीजें ही आपको इनमें से फाइंड करनी है ओवरऑल एफिशिएंसी.
ओके, तो पावर मिल गया आपके पास डिस्चार्ज हो गया, दो आंसर हमें मिल गए। और क्या फाइंड करना है? इफ द पंप इज टू ऑपरेट एट 900 आरपीएम, देन व्हाट विल बी द हेड डिस्चार्ज एंड आपका सिर्फ आरपीएम चेंज कर रहा है। केस 2 जो आपका केस 2 है, केस 2 कह लो या फिर उसी का आपका कंडीशन 2, जो n है, दैट n बिकम्स 900 आरपीएम, n2 इज 900। अगर n2 900 आरपीएम हो गया, उस केस में आपका जो यूनिट पावर है, सॉरी यूनिट स्पीड है, n बाई रूट n1 by root h1 equals to n2 by root. From here n2 will be under root 2 by 1. हमें h2 हेड फाइंड करना ना, हमें हेड फाइंड करना। You have to find head। तो हमें मिल जाएगा रूट 2 इक्वल्स टू n2 by n1 the root, that will be n2 is 900 divided by 200, h2 is 15, n2 is 900 no? So what is h1? h1 is 50. This is root, यहाँ से तो अगर h2 900 calculation 900 divided by 1500, 900 divided by 1500, that is 5.4. H2 is 5.4. H2 is 5.4 मीटर पर ये मिल गया। इसे सिमिलरली आप डिस्चार्ज के लिए फाइंड कर सकते हो। U is Q by 2 Q2 by यहाँ से Q2 हो जाएगा Q2 equals to Q1 term, but is Q1 is given as 0.2, H2 you just find 5.4 divided by 0.12 meter cube. Q will come as 0.12 meter cube, 0.12 meter cube per. This is what is PU? Power भी हमें चाहिए। PU is P by H to power P. P2 equals to H2 by H1। इस टाइप के क्वेश्चन आपके गेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। H2 by H1 to the power 3 by 2. What is P1? 43.28. Two 9 by 348. This will be 9.48. हमारे पास P2 मिल गया, Q2 मिल गया एंड H2 मिल गया। पहले आपकी पावर होगी, स्पीड पहले मिल चुकी थी। ओके, तो वी फाउंड ऑल दिस क्वांटिटीज जो हमें चाहिए थी। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके गेट एग्जामिनेशन में बहुत सारे मिलते हैं, गेट में भी, पीएसयू में भी।
इंजीनियरिंग साइंसेस में भी जो आपका यूनिट क्वांटिटीज पे, स्पेसिफिक स्पीड पे, मॉडल टेस्टिंग पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो बनते हैं वो इन्हीं सारी चीज। हो सकता है कि आपको इसमें से सिर्फ दो क्वांटिटी पूछ जाए, हेड और डिस्चार्ज क्या है या फिर डिस्चार्ज और पावर क्या है, राइट। तो इतना ज्यादा लेंथ नहीं होगा तो तीनों भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन में तीनों पूछे जा सकते हैं। ऑप्शंस गिवन होंगे आपके पास अलग अलग, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं। ओके, तो आई होप यू गॉट दिस प्रॉब्लम। लेट्स मूव टू कैविटेशन का प्रॉब्लम है। फाइंड द हाइट फ्रॉम द वाटर सरफेस at which a centrifugal pump may be installed in the case to avoid cavitation। कैविटेशन अवॉइड करने के लिए आप कितना ऊपर तक सेंट्रीफ्यूगल पंप को इंस्टॉल कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर गिवन है, वेपर प्रेशर गिवन है, इनलेट एंड अदर लॉसेस इन सक्शन पाइप is effective head of the pump is, that is manometric at 49 meter, cavitation parameter that is sigma is given as 0.11। Okay, let's try this question। Let us see what is given। Atmospheric pressure given PA 1.01 bar। We'll convert that into head, atmospheric head HA, and that is 101 into 10 per 5 Pascal convert here, and that divided by rho G, that is 981 G। Now that is converted into pressure head, that will be 1.21 10 to the power 5 divided by 9 10.29। But this is 10.29 meter of water, of course। 10.29 meter. Vapor pressure head is given EV 0.022, that HV मिल जाएगा हमें। वेपर प्रेशर हेड HV that is equals to 0.02 10 power 5 divided by 9 into 10 to the power 5, 10 to the power 5 divided by 9 at 1, that's 0.22224, and that's 0.224 meter, that is वेपर प्रेशर है। जो लॉसेस गिवन है यहाँ पे, that is HF 1.42, effective head that is HM is given as 49, cavitation parameter sigma is given as 0.11। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे गिवन है। व्हाट इज cavitation factor? cavitation factor होता है कितना? sigma is HA minus HB minus that is divided by H। Now what is HA minus HB?
ये जो एच एस है टोटल है माइनस एच एंड दैट इज और ये है सिग्मा। यहाँ पे सब कुछ गिवन है, सिर्फ एच एस हमें फाइंड। सिग्मा इज गिवन एज 0.115, एच ए इज 10.29 minus एच बी इज 0.224 minus एच एस minus 1.42 डिवाइड बाई 49 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 49। ये अब सब कुछ आपके यहाँ पे गिवन है। यहाँ से हमें एच एस जस्ट सॉल्व एच एस प्रॉब्लम। इस केस यू सॉल्व एच एस। 3.011। तो आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3.011। जो पंप है उस पंप को कैविटेशन अवॉइड करने के लिए उस पंप को आपको जो सम्प लेवल है उससे 3.11 मीटर 3.011 मीटर ऊपर लगाना। 3.011 मीटर ऊपर। ओके 3.011, that's how high above the water level we have to install this pump. Find the height from the water surface at which centrifugal pump may be installed, right? कितना ऊपर आपको इंस्टॉल। So I hope you got this। ये मैंने आपको बताया था कैविटेशन फैक्टर, हम लोग ने देखा था। Moving towards the next problem, quickly read this question and try to take 1 minute to read this question and then try to let us see what is given here first of all, right? Okay, यहीं पर आपका जो डिस्चार्ज है is given as 0.048 meter cube of water to a height of 24 meter।
H given है, that is 24, right? Water to a height of 24, तो ये 1.50 mm जो आपका डायमीटर है दोनों का, ds equals to db, delivery pipe diameter and suction pipe diameter and delivery pipe diameter, that is 150 mm, and length, इस पाइप की जो लेंथ है that is given as 120 meter by a centrifugal pump. If the overall efficiency is 75% and coefficient of friction is given here 0.01, find the power required to drive the, okay? इस क्वेश्चन में जो कहा गया है वो ये है, ये जो पंप था आपका यहाँ पे, समथिंग लाइक, ये जो टोटल लेंथ है इस पाइप की जो टोटल लेंथ है दैट इज 120, ये जो पाइप है इस पाइप की टोटल लेंथ है 1 में और 20 मीटर, और ये जो एच एस है यहाँ पे आपका ये एच डी था और ये एच एंड एच, दिस इज 24 मीटर एंड दैट इज एच, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज एच एस प्लस एच डी आपको गिवन है दैट इज 24 मीटर, जो लेंथ है सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप की टोटल लेंथ दैट इज 120 मीटर। आपसे जो पूछा गया है वो ये है कि फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द, व्हाट विल बी पावर रिक्वायर्ड, यस। तो पावर क्या होगा, पावर के लिए हमें क्या चाहिए, लेट अस सी कि हमें क्या चाहिए उस पावर के लिए। ओवरऑल एफिशिएंसी गिवन है, ओवरऑल एफिशिएंसी वाटर पावर बाय शाफ्ट पावर, वाटर पावर इज रो जी क्यू एच एम बाय 1000 बाय शाफ्ट पावर, दिस शाफ्ट, ओके। अब यही शाफ्ट पावर हमें चाहिए, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, ये शाफ्ट पावर चाहिए हमें, दिस शाफ्ट पावर इज रो जी बाय 1000 1000 ओवरऑल। now हमारे पास रो है दैट इज वाटर 1000, जी है, क्यू है, क्यू इज 0.048 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ वी नीड मैनोमेट्रिक हेड, यहाँ पे हमें जो चाहिए वो है मैनोमेट्रिक हेड। नाउ हाउ विल गेट मैनोमेट्रिक, मैनोमेट्रिक हेड कैसे मिलेगा, जो मैनोमेट्रिक हेड का फार्मूला होता है, फार्मूला फॉर मैनोमेट्रिक हेड जो मैंने बताया था आपको, लेक्चर लिया था, दैट इज एच एस प्लस एच डी प्लस एच एस प्लस एच एफ डी प्लस बी डी स्क्वायर बाय, दिस इज बी डी स्क्वायर बाय डिलीवरी पाइप में जो वेलोसिटी है दैट इज डिवाइड बाय, तो एच एस एच डी तो हमें गिवन है, एच एफ एस एच एफ डी और बी डी स्क्वायर बाय 2g, दैट वी नीड टू फाइंड। अगर ये हमें मिल गया तो हमें पावर तो आसानी से यहाँ से, ओके। नाउ व्हाट इज एच एफ एस प्लस एच एफ डी, जो फ्रिक्शनल लॉस है दैट इज एच एफ एस प्लस एच एफ डी, डार्सी बीस्बैक इक्वेशन से 4f एल वी स्क्वायर, यहाँ पे फ्रिक्शन फैक्टर नहीं गिवन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट गिवन है, इसलिए हमने 4f यूज किया है बाय 2g t, now 4 f is 0.01 and is 120, now what is v, that is 2.15, राइट। vd तो हमें अभी भी चाहिए यहाँ पे, what is vd, velocity in discharge pipe is velocity in suction pipe and that is equals to discharge by area, what is discharge, 0.048 divided by pi by 4 d square 0.15, let me see,
that is 2.71, and that will be 2. BD equals to 2.71. ठीक, तो यहाँ पे आप BD भी रख लेंगे 2.71 मीटर पर सेकेंड, 2.71। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा व्हाट इज द एच एफ एस प्लस टोटल हेड। तो क्योंकि जो हमने लेंथ लिया है, यहाँ पे जो हमने लेंथ लिया है वो टोटल लेंथ लिया है। ये जो हमने लेंथ लिया है ये टोटल लेंथ, दिस टोटल लेंथ इज 120 मीटर, और फ्रिक्शनल लॉस हमें इस टोटल लेंथ में ले लिया है, तो हमें एच एफ एस, यहाँ पे जो लॉस है दैट इज एच एफ एस, और यहाँ पे जो लॉस है एच एफ, ये दोनों एक साथ कंबाइंड हमें मिल जाएंगे, दैट इज इक्वल टू एच एच एफ इज एच एफ एस टोटल फ्रिक्शन लॉस आपका, टोटल फ्रिक्शनल लॉस इज फ्रिक्शनल लॉस इन सक्शन पाइप, फ्रिक्शनल लॉस इन डिलीवरी पाइप, एच एफ एस प्लस एच एफ, ये आपको यहाँ से मिल गया, that will come as that will come out as 4 into 9.2, 11.97 meter, 11.97. This is H. Then what will be the HM then? HS plus HD plus HFS plus HFD plus BD square by, that is 24 meter plus 11.97 plus BD 2.71 whole square by, इसको सॉल्व कर लेंगे, 36. And that will be 36. ये मिल गया, तो शाफ्ट पावर विल बी रो जी क्यू एच बाई 1000 into 9.36 divided by 1000 over efficiency is point. Shaft power from here will be, तो सॉल्व कर लेंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा तो 36 पॉइंट डिवाइड बाय पॉइंट 22 पॉइंट, शाफ्ट पावर विल बी 27 पॉइंट। ये है वो पावर रिक्वायर्ड जो उस पंप को ड्राइव करने के लिए, दिस इज पावर, ये वो पावर है जो शाफ्ट को ड्राइव करने के लिए, शाफ्ट को ड्राइव करने के लिए जो पावर आपको चाहिए, दिस power required to drive the, I hope you got this. Let's move further. Next.
I'll give you 1 minute to read this question, then 1 more minute to try this question. Then I will try. Pump impeller is 375 mm in diameter and discharges water with velocity components 2 meter per second and 12 meter per second in radial direction and tangential direction respectively. वेलोसिटी के जो कंपोनेंट है रेडियल और टेंजेंशियल दैट इज Vw1 एंड F1. तो आपको Vf1 गिवन है, Vw1 गिवन है. यहाँ पे जो गिवन है इस Vf1 इज 2 मीटर पर सेकेंड, Vw1 इज 12 मीटर रेडियल डायरेक्शन में और टेंजेंशियल डायरेक्शन. Impeller is surrounded by a concentric cylindrical chamber with parallel slats. Parallel slats. The outer diameter being 450 mm. To given है D2 is 450 mm और D1 given था 375. Impeller का इनलेट और आउटलेट diameter 375 mm है, 450. The flow in the chamber is free vortex. मैंने पहले ही बताया था आपको, जो भी आपका चैम्बर, जो इम्पेलर के अराउंड जो कंसेंट्रिक सिलेंडर लगाते हैं या फिर कंसेंट्रिक चैम्बर लगाते हैं दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजर. उस डिफ्यूजर में यहाँ पे डिफ्यूजर नहीं कहा गया, कंसेंट्रिक सिलेंडर का दिया गया चैम्बर है जिसमें पैरेलल स्लाइड्स लगे. ओके, डिफ्यूजर में यहाँ पे एरिया इंक्रीजिंग होता है, इसका नाम हमने डिफ्यूजर रखा था. यहाँ पे पैरेलल स्लाइड्स है, सिलेंड्रिकल स्लाइड्स विद पैरेलल स्लाइड्स लिख दिया गया. लेकिन इसमें जो फ्लो है दैट फ्लो इज फ्री वोर्टेक्स. मैंने आपसे बताया था डिफ्यूजर में जो फ्लो होता है फ्री वोर्टेक्स होता है, इम्पेलर में जो फ्लो होता है दैट इज फोर्स्ड वोर्टेक्स. फ्री वोर्टेक्स और फोर्स्ड वोर्टेक्स दोनों की कंडीशन अलग होती है, दोनों की इक्वेशन अलग होती है. अगर फ्री वोर्टेक्स एंड फोर्स्ड वोर्टेक्स दोनों की कंडीशन आती है. हमें जो फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज ऑफ वाटर ऑन लीविंग ऑन एग्जिट दैट इज Vf2 एंड Vw2 एंड इंक्रीज इन प्रेशर. प्रेशर कितने से इंक्रीज कर गया ये दोनों हमें फाइंड. so let's try find. तो फर्स्ट ट्राई जो मैंने दो तीन चीजें जो वोर्टेक्स मोशन में पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स, उस केस में मैंने आपको बताया था कि जो वोर्टेक्स मोशन होता है फ्री वोर्टेक्स एंड फोर्स वोर्टेक्स, तो जो फ्री वोर्टेक्स होता है उसमें प्रेशर चेंज फाइंड करने के लिए किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में फ्री वोर्टेक्स में यू कैन जस्ट अप्लाई Bernoulli's equation because that flow free vortex is irrotational. Free vortex is irrotational. That's why you can apply Bernoulli's equation. ये हमने डिस्कस किया था जब फ्लूइड मैकेनिक्स में वोर्टेक्स मोशन. ओके, एट दैट टाइम वी डिसाइडेड फ्री वोर्टेक्स. तो पहले हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है. तो गिवन था तो हमने देख लिया सोल्यूशन. फॉर फ्री वोर्टेक्स एक चीज और मैंने बताई थी कि जो फ्री वोर्टेक्स होता है, फॉर फ्री वोर्टेक्स जो इक्वेशन होती है वी आर इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये मैंने बताया था आपको जब हम फ्री वोर्टेक्स पढ़ रहे थे कि आपका फ्री के लिए होता है वी आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, फोर्स्ड के लिए जो होता है दैट इज वी इक्वल्स टू आर, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा एंड वी आर इक्वल्स टू कांस्टेंट. फ्री वोर्टेक्स दैट मींस Vw1 R1 and that should be equals to Vw2 R2. जो Vw2 है यहाँ से सिंपली मिल जाएगा आपको. सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री वोर्टेक्स के लिए कौन सी इक्वेशन यहाँ पे हम यूज करते हैं. अब मैंने बताया था फ्री वोर्टेक्स के लिए वी आर इक्वल्स टू कांस्टेंट यूज करते हैं, इरोटेशनल फ्लो है, और फोर्स वोर्टेक्स के लिए वी इक्वल्स टू और ओमेगा यूज करते हैं, यहाँ पे एक एक्सटर्नल टॉर्क.
तो यहाँ पे फ्री वॉर्टेक्स था इसलिए हमने इक्वेशन यूज कर ली, दैट इज VW1 R1 by VW1 is given, R1 is given as 375, is 375, no? 375 by 2, and this R2 is 450 by d1 by d2 भी लिख सकते थे, तो कैंसिल कर लेंगे, दैट मीन्स 10। तो जो आपका वेलोसिटी हो गई VW2 हो गया, यहाँ से VW2 इज 10 मीटर, VW2 मिल गया। और आपकी जो इक्वेशन है, जो डिस्चार्ज है, फाइव चार्ज फाइव D1P1 इक्वल्स टू फाइव D2 BF2, फाइव D2 BF2, B1 इक्वल्स टू B2, ये आपको गिवन है। पैरेलल स्लाइड्स है, पैरेलल स्लाइड्स है मतलब विड्थ दोनों साइड में आपका सेम होगा, पैरेलल स्लाइड्स। जो विड्थ है, विड्थ एट इनलेट एंड विड्थ एट आउटलेट इज सेम, विड्थ एट इनलेट एंड आउटलेट इज सेम, B1 इक्वल्स टू B2, ओके, B1 इक्वल्स टू B2, विड्थ इज, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं B1 इक्वल्स टू B2। तो यहाँ पे जो सिंपली बच गया, दैट इज D1 BF1 इक्वल्स टू D2 BF2, यहाँ से BF2 फाइंड कर लेंगे, दैट इज D1 by D2 into BF1, that is BF1, D1 D2 आपको given है here, D1 and D2 is given, and simply you can find BF2, that is simply given as BF2. What is D1? D1 is 375, D2 is 450, and BF2 is BF1 is BF2 is, let's simply find that. Okay, simply you can find this. Okay. 1.66. This is simply 1.66, 1.667 मीटर पर। ओके, तो एक तो आपको ये मिल गया VW2, ये हमें चाहिए था, और BF2। आउटलेट पे जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है, रेडियल और टेंजेंशियल दोनों मिल गए। सेकेंड, जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट तो हमने फाइंड कर लिया, जो सेकेंड पार्ट था वो था कि जो आपका फ्री वॉर्टेक्स था, सॉरी, या फ्री वॉर्टेक्स के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, सिंपली अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, inlet and outlet, between inlet and outlet, applying Bernoulli equation between inlet and outlet. Inlet and outlet, P1 by rho g plus P1 square by 2g, and that is equals to P2 by rho g plus P2 square by, okay, हमें जो प्रेशर डिफरेंस चाहिए, दैट मीन्स वी नीड P2 minus P1 by rho g, that is equals to P2 square, P1 square minus P2 square, P1 square minus V2 square by 2g, pressure rise, P1 square minus 2g, V1 square minus V2 square by 2g, तो ये भी आपका एक प्रेशर हेड डिफरेंस हो गया, और ये आपको कैसे मिलेगा।
V1 V2 कैसे मिलेगा? V1 is under root B F1 square, velocity triangle is simple, BW1 square, and V2 is under root BF2 square plus BW. Sorry, this is BF2 square plus BW. BF2 square plus BW. Right, V1 plus V1 by V2. ओके, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, V1 V2 यहाँ से मिल जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे एंड विल फाइंड द change in change in pressure, and that will come as मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, that is 2.3 meter of pressure will come as 2.3 meter of, right? pressure head ये P2 by rg minus P1 by rg pressure head के टर्म में करके, that is 2.3 meter of, that will be the moving towards the next topic. Two geometrically similar pumps are running at the same speed of 1000 rpm. One has impeller diameter of 0.4 meter and discharge 30 liter per second against a head of 20 meter. If the pump give half of this discharge rate, if the other pump, जो दूसरा पंप है, give half of this discharge rate, determine the head and diameter of the second. दो पंप है आपके पास, give the pump and discharge of the second, head and discharge of the सिंपल क्वेश्चन है, मॉडल टेस्टिंग का सिंपल क्वेश्चन है दैट यू कैन सॉल्व. दो पंप है, ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप है, सेम स्पीड है, N2 equals to 1 and that is 1000, तो D1 है that is 0.4, discharge Q1 है that is 30 liter per second against head of H1 is given as 20. If the other pump give Q2 is Q1 by 2, that is 15 liter per second, 15 liter per second. Determine the head and diameter of the second pump. सिंपल है, हेड एंड डायमीटर ऑफ द सेकंड पंप फाइंड करना. आप स्पेसिफिक स्पीड दोनों के सेम कर सकते हैं, स्पेसिफिक स्पीड दोनों के सेम कर लेंगे. व्हाट इज स्पेसिफिक स्पीड? n अंडर रूट q by h1 to the power 3 by 1 q, that is n2 under root q2 by h2 to the power 3 by 4. यहाँ से हमें n1 by n2 मिली, हमें h2 फाइंड है, n1 n2 तो सेम गिवन है तो कैंसिल हो जाएगा, h2 मिल जाएगा हमें यहाँ से, we will find 2 to the power 3 by 4
that is equals to N2 by N1, N2 by N1, and that is root Q2 by root Q1 into H1 to the power 3 by 4. H1 power 3 by 4. Okay, इसको हम सॉल्व कर लेंगे. N1 N2 is same और Q2 Q1 given है. 2y equals to 1350 that is given. H1 is also given that is 20 meter. तो आप सॉल्व कर लेंगे. You will solve and tell me the आंसर कितना आएगा ये. Okay, find under root Q2 by Q1 that is 1 by 2 H 6.68 6.68 to the power 12.5. This is 12.5. तो सॉल्व कर लेंगे आप. जो आपका आंसर आएगा 12.59. This H2 will come as 12.59. Right? This H2 is 12.59. H2 is 12.59. ओके, तो आपको H2 मिल गया, हेड मिल गया. डायमीटर भी आपको चाहिए, तो डायमीटर का सिंपल है. आप मॉडल टेस्टिंग क्वेश्चन यूज करेंगे. दैट इज अंडर रूट HM by Dn equals to constant. यानी H1 by D1 N1 square equals to H2 by D2 square N2 square. N1 N2 is same, that will be cancelled out. या फिर यही फंड का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, क्या अंदर नहीं रख लेते. एक ही चीज के बाद हमें वही करना पड़ेगा. लेटेस्ट सिंपल सॉल्व कर लेंगे, कुछ बचा नहीं इस क्वेश्चन. From here, under D2 equals to D1 under root H2. From here, D2 will be D1. What is D1? 0.4 into under root 0.31. Diameter will be 0.317. Diameter will be 0.317. 0.317. 0.317. This is your. Okay, let's solve the other question. Okay. Just read this question quickly and try to solve.
A centrifugal pump running at 750 rpm discharges water at 0.1 meter cube per second against a head of 10 meter at its best efficiency. A second homologous pump, when working at 500 rpm, is to deliver 0.05 meter cube per second at its best efficiency. What will be the design of the second pump, and what is the scale ratio between the फर्स्ट एंड सेकेंड? ये सिंपल है. इसका देखते हैं सॉल्यूशन. जो आपका स्पेसिफिक स्पीड है जो गिवन, पहले देखे थे क्या क्या गिवन है. इस क्वेश्चन गिवन है n1 is 750 rpm, q1 is given as 0.1 meter cube per second, and head is given as 10 meter. The second homologous pump runs at 500 rpm, is to deliver 0.05 meter cube. Right. What is the design head of second pump? H2 आपसे पूछा गया है और स्केल रेशियो पूछा. राइट, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है. व्हाट इज स्पेसिफिक स्पीड, दोनों को सेम कर लेंगे. स्पेसिफिक स्पीड ऑफ 1 इक्वल्स टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ 2. ओके, स्पेसिफिक स्पीड विल बी कॉमन, तो हम सेम कर लेंगे. दैट इज कितना बच गया, n1 under root q1 by h1 to the power 3 by 4 and 2 under root q2 by h2 to the power 3. n1 n2 हो गया, q1 q2 हो गया, h1 and h2. h2 ही बस आपको यहाँ से चाहिए होगा. दैट इज दैट. सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछली बार किया था. और 3.67 मीटर में डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ इसका. दैट इज 3.67. h2 is 3.6. h2 is 3. और आपको चाहिए स्केल रेशियो. व्हाट इज, ये तो हेड मिल गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज स्केल रेशियो. स्केल रेशियो इज q1 by q2. हमने देखा था स्केल रेशियो, दैट इज lr पावर 2.5, 5 by 2 या फिर 2. ओके, q1 q2 आपको गिवन है. स्केल रेशियो यहाँ से मिल जाएगा, एंड दैट विल बी 1.1. स्केल रेशियो, मॉडल टेस्टिंग में स्केल रेशियो मैंने आपको बताया था. फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्चार्ज का स्केल रेशियो कैसे लिखते हैं, राइट, फ्लूइड मैकेनिक्स में बताया था, वही यहाँ पे भी होगा. स्केल रेशियो इज 1. सिंपल क्वेश्चन था. स्केल रेशियो हमने आपको पढ़ा था जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, तो डिस्चार्ज का स्केल रेशियो q1 by q2 कितना होता है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस किया. सेम आप यूज कर. बाकी स्पेसिफिक स्पीड आपने इक्वेट कर लिया. यू फाउंड द I hope you got this. Now moving towards the top. It is required to pump the water out of a deep well under a total head of 90 meter. Okay? Under a total head of 90 meter. A number of identical pumps of design speeds 1000 rpm, number of identical pumps of design speed 1000 rpm and specific speed 30 with the rated capacity this are available. ये वाले पंप्स अवेलेबल हैं. हाउ मेनी पंप्स आर रिक्वायर्ड, तो कितने पंप आपको लगाने पड़ेंगे और उनका कनेक्शन क्या होगा, सीरीज या पैरेलल. ओके, तो यू कैन सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन.
कितने सारे पंप लगाने पड़ेंगे और किस कनेक्शन में लगाने पड़ेंगे, सीरीज कनेक्शन या फिर पैरेलल कनेक्शन। I'll give you 1 minute to read this question and then we will be solving. एक 90 मीटर टोटल हेड है आपके पास, टोटल हेड है 90 मीटर, और आइडेंटिकल पंप्स, जितने भी पंप्स आपके पास अवेलेबल है, ऑल दीज पंप्स आर आइडेंटिकल पंप्स ऑफ डिजाइन स्पीड 1000 आरपीएम एंड स्पेसिफिक स्पीड 30, रेटेड कैपेसिटी, डिस्चार्ज गिवन है, एनएस गिवन है, एन गिवन है, राइट। आपको टोटल हेड गिवन है, आपको बताना है कि कितने पंप वहां पर रिक्वायर्ड होंगे और उनको कैसे लगाना पड़ेगा, सीरीज कनेक्शन में या फिर पैरेलल कनेक्शन। Just take 1 or 2 minutes to solve this question, to read and this solve. Hardly 1 minute का क्वेश्चन था ये, 1 या 2 minutes, within 2 minutes you have to solve this question. Only 2 minutes to solve this question. Let us first write what is given. Let's first write what is given. Total head required है, that is given as 90 meter. Total head required is given as 90 meter. And the number of identical pumps are designed for this. Number of identical pumps, speed जो given है, that is 1000 rpm, and specific speed that is given as 30. Rated capacity discharge is 0.15 meter. So let us find specific speed क्या होती है, that is n under root q h m to the power 3 by, from here h m to the power 3 by 4, that is n under root q by 1000 under root 0.15 divided by 30. ये यहां से जो हमारा हेड आएगा दैट विल बी हेड ऑफ 1. जो मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, जो एक सिंगल पंप कितने हेड के अंडर वर्क कर रहा है, ये हमें मिल जाएगा 1000 to under root 0.15 divided by 30, that is 12.9 power 4 by 3, that is 30.28. HM आ गया, मैनोमेट्रिक हेड आ गया, दैट इज 30.28, दैट 30.28 मीटर, और ये है हेड बाय ईच पंप, हेड बाय ईच, जो नंबर ऑफ पंप्स लगेंगे आपके पास, नंबर ऑफ पंप्स रिक्वायर्ड जो होगा दैट विल बी टोटल हेड डिवाइड बाय हेड बाय ईच पंप, head by each, that is 90 by 30.28, and that is equals to head something less than 3, but pump तो आपको 3 ही लगाने पड़ेंगे, that pump will be required head will be okay. तो पंप तो आपको 3 लगाने पड़ेंगे. दूसरा क्वेश्चन ये है कि सीरीज में लगाना है या फिर पैरेलल. तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको हेड की ज्यादा जरूरत होती है, अगर आपके पास हेड रिक्वायर्ड ज्यादा है, एक इम्पेलर आप यहाँ पे लगाएंगे, समथिंग लाइक ये जो पंप्स हैं, ये पंप्स
सीरीज में लगाए जाएंगे अगर आपको हेड रिक्वायर्ड ज़्यादा चाहिए होता है। इफ हेड रिक्वायर्ड और अगर ज़्यादा हेड आपको चाहिए तो दैट मीन्स जो आप कनेक्शन करते हैं दैट इज इन सीरीज। जो पैरेलल कनेक्शन करते हैं पंप का, एक पंप का आउटलेट यहाँ पे, फिर जो दूसरा पंप है उसका भी आउटलेट, ये सब कुछ आउटलेट जोड़ दिया आपने, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, दैट विल बी टोटल हेड, दैट विल बी क्यू। यहाँ से क्यू गया, यहाँ से क्यू गया, यहाँ पे जो टोटल हेड जाएगा दैट विल बी डिस्चार्ज, सॉरी, टू क्यू। और ये है आपका पैरेलल, दैट इज योर पैरेलल कनेक्शन। तो अगर आपको ज़्यादा डिस्चार्ज चाहिए तो पैरेलल, और यहाँ पे ज़्यादा हेड चाहिए, टोटल हेड इज ज़्यादा हेड चाहिए तो आप सीरीज में ऐड करते हैं, अगर डिस्चार्ज ज़्यादा चाहिए तो आप पैरेलल में ऐड करें। यहाँ पे हमें हेड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 3 पंप है और हेड ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वी विल यूज दिस इन सीरीज कनेक्ट, ऐड इन सीरीज, ज्वाइन इन, जो कनेक्टेड है should be connected in series. Okay? All these heads must be, all these heads must be connected. Okay, so let's move towards the next problem. I hope you understood all this. एक जो हमारे पास टोटल हेड रिक्वायरमेंट था दैट इज 90 मीटर, और एक पंप, सारे आइडेंटिकल पंप थे, और एक पंप से हमें 30 मीटर की हेड मिल सकता है। एक लेंगे 1 से 30, 30 टू 60, 60 टू 90, ऐसे 3 पंप्स हम सीरीज में लगा देंगे तो हमें हमारा टोटल रिक्वायर्ड हेड मिल जाएगा, एंड वी विल फाइंड इट, विल फाइंड आवर टोटल हेड। Now let us next question. Okay. You solve this question. I'll give you 1 minute to read this question and another 1.5 minute, 2 minutes to read and solve this question. Then I will do. Then I'll do. You have to find minimum starting speed of pump. You just try this question. आपको जो गिवन है, इम्पेलर डायमीटर d1 d2 गिवन है, फ्लो वेलोसिटी गिवन है एट आउटलेट, फ्लो वेलोसिटी मींस v(f2) गिवन है, वेन्स आर सेट बैकवर्ड्स एट 45 डिग्रीज, दैट मींस कि आपको 5 वेन एंगल एट आउटलेट दैट इज 5, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज 70%। तो मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ पंप आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ that we have to find minimum starting speed.
Try to draw the velocity triangle also. Let us first see इसमें क्या क्या given. Let us first see what is given. 360 mm, right? Inlet diameter is 360 mm. Outlet diameter is 720 mm. P2 flow velocity at outlet is 2.4 meter per second. And the vanes are set backwards. Phi is 45 degrees outward. Manometric efficiency is 70. All these things are given. Okay. ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो पूछा गया है वो ये कि मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ पंप. व्हाट इज मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ पंप? मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ पंप. क्या कंडीशन होनी चाहिए? जो इम्पेलर में प्रेशर राइज हो रहा है, pressure rise in the impeller, that is u2 square by 2g minus 1 square by 2g, that should be less than or that should be greater than or equal to h, and that should be greater than or equal to h. या तो मैनोमेट्रिक हेड से ज्यादा हो या मैनोमेट्रिक हेड के बराबर, या फिर ये और u1 u2 आपको मिल जाएगा. डायमीटर गिवन है और इसकी स्पीड तो आपको फाइंड करनी है, आपको फाइंड करना है, इसमें हम इसको रख लेंगे. एच एम आपको वो भी स्पीड की टर्म में मिल जाएगा. व्हाट इज एच एम? एच एम कैसे है? मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज गिवन एज GHM by VW2. तो VW2 आपको चाहिए और आपको U2 चाहिए, तो आपको यहाँ से HM मिल जाएगा. ओके, HM आपको चाहिए तभी आप कंपेयर करेंगे. उसके अलग हमें जरूरत पड़ेगी नहीं. या तो आप ऐसे फाइंड कर लेंगे इस तरह से, या फिर जो मैंने आपको मिनिमम स्पीड के एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उस फॉर्मूले से लिख लेंगे. मिनिमम स्पीड एंड that is 120 into manometric efficiency into VW2 V2 VW2 into VW2 into 2, right, and phi V2 square minus. तो यहाँ पे सब कुछ गिवन है, सिर्फ VW2 हमें चाहिए. ठीक, तो इसका यूज नहीं करेंगे, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी डायरेक्टली यूज कर लेंगे. हम यहाँ से भी कर सकते थे VW2 और सब कुछ आपको फाइंड, आपको वैसे भी VW2 आपको फाइंड करना ही पड़ेगा. ये फॉर्मूला याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा. अदरवाइज इसमें आपको पता है व्हाट इज U2 पाई D2n by 60 एंड U1 पाई D1n by. यहाँ पे भी n रख देंगे, ये भी n मिनिमम है, इसको भी n को आप n मिन रख लेंगे, n को आप n मिनिमम रख लेंगे. ये जो इक्वेशन बन जाएगी हो जाएगी U2 स्क्वायर बाई 2g माइनस U1 स्क्वायर बाई 2g. अगर n को आपने मिनिमम रख लिया तो यहाँ पे आप इक्वालिटी का साइन, तो यहाँ से आपको मिनिमम स्पीड. ओके, तो आप ऐसे भी रख सकते हैं. n मिनिमम है आपका. HM में भी यहाँ से जो HM लिखा था आपने, HM भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी मैंने अपने भी लिखा था GHM बाई VW2. यहाँ से HM फाइंड कर लेंगे. U2 आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये भी n के टर्म में होगा, राइट. तो ये जो फार्मूला आया था ये सब ऐसे ही करके आया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं स्टेप से ये फार्मूला. इसमें हमें चाहिए सिर्फ VW. तो VW2 के लिए पहले हमें एक जरूरत नहीं थी, इनलेट ट्रायंगल की जरूरत नहीं है इसको, लेकिन फिर भी ड्रा कर दूंगा. दैट इज अल्फा. हमें जरूरत है आउटलेट एंगल. दिस एंगल इज फाई, सॉरी, दिस एंगल इज फाई. दिस इज VR2, दिस इज V2, VW2, दिस इज ओके, एंड दिस इज. यहाँ से tan फाई कितना हो जाएगा? tan फाई आपको गिवन है यहाँ पे 45 डिग्री. tan फाई इज VF2 बाई U2 minus VW. Okay. Now what is U2 minus VW2? What is U2 minus VW2? VF2 आपको given था. How much is the VF2? 2.4 meter by tan phi. Tan phi is tan 45. That is 2.4.
दैट इज 2 पॉइंट। यहाँ से आपको मिल गया U2 माइनस VW2 इज 2.4 मीटर पर सेकेंड। और U2 क्या है पाई dn के टर्म में, पाई d2 एंड व्हाट इज पाई, पाई तो आपका पाई है, व्हाट इज d2 0.36 सॉरी 0.7 divided by 0.037, this is 0.037, जो आपका U2 है एंड मिनिमम के टर्म में है वो 0.0377 एंड मिनिमम माइनस VW2 इक्वल्स टू 2.4, VW2 इक्वल्स टू 2. यहाँ से VW2 मिल जाएगा एंड मिनिमम के टर्म 0.0377 एंड मिनिमम माइनस 2. जो हो गया VW2, इस फॉर्मूले रख लेंगे, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे नोन है। तो जो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका एंड मिनिमम इक्वल्स टू 120 इंटू मैन्योमेट्रिक एफिशिएंसी इज 70%, 0.7 इंटू VW2 is 0.0377 n minimum minus 2.4 minus 2.4 into D2 0.72, D2 is 0.72, right? Into D2 is 0.72 divided by pi D2 square 0.72 square minus 0.36, 0.72 square minus 0.36, 360 mm and 720. ओके दिस, अब इन सबको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको n मिनिमम, you solve this equation and you will find, quickly tell me the answer, what is n minimum. जो आपको मिलेगा एन मिनिमम, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आपको, दैट विल बी 137.2, 137.2, 137.2 आपको, ठीक, ये हो गया आपका एन मिनिमम। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए। मॉडल टेस्टिंग मैंने आपको पहले बताया कि मॉडल टेस्टिंग, स्पेसिफिक स्पीड, मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड, ये सारी जो चीजें हैं, यूनिट क्वांटिटीज, इन सब पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन सब पे बनते हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट। जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आप देने जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे, ऑल दिस क्वेश्चन विल बी देयर, ओके। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर है। ओके, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म। यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लस या आइकॉनिक जो भी आपको सुटेबल लगता है। आइकॉनिक इज बेटर फॉर यू बिकॉज यू विल गेट पर्सनल असिस्टेंस देयर, और यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन नहीं, आपकी रैंक बेटर करने के लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। ऑलराइट, नाउ use this referral code RAVIPY to get 10% discount in your total subscription fees, right? Thank you very much, thanks for the value. Okay.